Hello everyone, I welcome you all to Guru Mantra classes. तो आज हम करेंगे लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 सिविक्स, दैट इज चैप्टर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। देखो नाम ही बोलता है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, मतलब प्रॉब्लम्स विच कम इन वे ऑफ वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन अ कंट्री। लेट्स स्टार्ट विद द ओवरव्यू फर्स्ट. So basically this is the concluding chapter and it draws upon all that you have learned in the last 2 years so as to address the fundamental questions of democratic politics, like what are the challenges that democracy faces in our country and elsewhere, and what are the reforms which we can bring out. So this chapter does not answer these questions. It only makes some suggestions about the way in which we can approach the questions of challenges and reforms. So let's start. पहले हम पढ़ेंगे challenges के बारे में. तो मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क करवा रही हूँ और नोट्स भी मैं अपलोड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एक बार यू कैन गो थ्रू दी चैप्टर 1, एक बार पूरी रीडिंग कर लेना, देन यू कैन रीड नोट्स एंड देन यू कैन स्विच ऑन टू क्वेश्चन एंड आंसर्स. अब द प्रॉमिस ऑफ डेमोक्रेसी इज फार फ्रॉम रियलाइज्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड. डेमोक्रेसी डज नॉट हैव अ चैलेंजर, बट दैट डज नॉट मीन दैट इट डज नॉट फेस एनी challenges. At different points in the story of democracy, we have noted the serious challenges that democracy faces all over the world. A challenge is not just any problem. We usually call only those difficulties a challenge which are significant and which can be overcome. A challenge is a difficulty that carries within it an opportunity for progress. And once we overcome a challenge, we go up to a higher level than before. So, अगर challenge की definition आए तो you can combine them and write it into a sentence. Now, different countries face different kinds of challenges. क्यों? क्योंकि अलग अलग नेचर होता है डेमोक्रेसी के हर कंट्री में. अब at least 1/4 of the globe is still not under democratic government. The challenge for democracy in this part of the world is very stark. These countries face the foundational challenge. अब हम पढ़ेंगे types of challenges, जिसमें पहले आता है हमारा foundational challenge of making the transition into democracy and then instituting democratic government. It involves bringing down the existing non-democratic regime, keeping military away from controlling government, and establishing a sovereign and functional state. तो ये जो हमारा पहले चैलेंज है, फाउंडेशनल चैलेंज, ये फोकस करता है उन कंट्रीज में जहाँ अभी तक डेमोक्रेसी है नहीं. ये बोलता है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स हैं हम उसको हटा के वी शुड एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी and we should keep military away from the controlling government and establish a sovereign and functional state. Sovereign मतलब हम अपनी कंट्री को खुद गाइड करेंगे, कोई हमें बताएगा नहीं, कोई हमें डायरेक्शंस नहीं देगा. अब पढ़ते हैं सेकंड चैलेंज के बारे में, विच इज चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन. तो इट इज फेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज. इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ democratic government across all the regions, different social groups, and various institutions, ensuring greater power to local governments, extension of federal principle to all the units of federation, inclusion of women and minority groups, etc. fall under this challenge. This also means that less and less decisions should remain outside the arena of democratic control. Most countries, including India and other democracies like US, face this challenge. तो हमारा second challenge है challenge of expansion. तो as the name suggests, ये बोलता है जो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल it should reach to everyone, including like it should give greater power to local government. फेडरलिज्म जो है वो हर लेवल में होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, वुमेन, माइनॉरिटी ग्रुप, एसटीज इन केस ऑफ इंडिया शुड बी प्रोटेक्टेड. और ये जो एग्जाम्पल है ये जो चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन है हम ये स्पेशली विजिबल है इन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड यूएस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड चैलेंज. थर्ड चैलेंज है डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. इट इज फेस्ड बाय एवरी डेमोक्रेसी इन वन फॉर्म और अनदर. It involves strengthening of the institutions and practice of democracy. This should happen in such a way that people can realize the expectations of democracy. But ordinary people have different expectations from democracy in different society due to their interest, due to their social positions. Therefore, this challenge takes different meanings and paths in different parts of the world. अगर हम बोले इनको simple और general terms में, basically it means strengthening those institutions that help people's participation and control. This requires an attempt to bring down the control and the influence of the rich and powerful people in making governmental decisions. This is about deepening of democracy. We should look forward to to make it more deepen, and how we can do it. We can reduce the role of rich in the process
in the process of decision making in government, and then like जो institutions है which regulate the people participation and control, हम उसको और strengthen कर सकते हैं. Through these measures we can deepen our democracy. Now we have noted or hinted at these challenges in all the various examples and stories that we studied in a textbook of class 9 and in the early chapter of this book. Now let us go back to all major stops in our tour of democracy and refresh our memory and note down the challenges that democracy faces in each of these. तो basically ये कंक्लूडिंग चैप्टर है, तो हम हर चैप्टर का छोटा छोटा ओवरव्यू पढ़ेंगे इसमें. पहला, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट चैलेंजेस. देखो, ईच ऑफ दीज कार्टून रिप्रेजेंट अ चैलेंज टू डेमोक्रेसी. प्लीज डिस्क्राइब व्हाट दैट चैलेंज इज. ऑल्सो प्लेस इट इन वन ऑफ द 3 कैटेगरीज मेंशन इन द फर्स्ट सेक्शन. फर्स्ट सेक्शन मैंने आपको बताया था, पहला है हमारा फाउंडेशनल चैलेंज जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होता है. दूसरा हमारा चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ एक्सपेंशन लिख देती हूँ मैं पूरा, एक्सपेंशन. और जो हमारा थर्ड चैलेंज है वो है डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. मुबारक री इलेक्टेड. देखो, शैल वी ओपन दीज थिंग्स, ये सब क्या है, सितंबर 7 इलेक्शंस, ये सब देखो यहाँ पे री इलेक्टेड है, तो डेमोक्रेसी तो ऑलरेडी है. अब हमें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया एलिमिनेट. हमारे पास 2 बचते हैं, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन और डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. तो आप ये कैसे पता लगाओगे? देखो, यू हैव टू यूज योर माइंड इन दिस. मैं ना आपको हिंट दे रही हूँ एंड यू वुड हैव टू आंसर मी द फाइनल आंसर इन द कमेंट सेक्शन. लेट्स सी हु आंसर्स द करेक्ट वन. तो इसका हिंट ऑलरेडी हो चुका है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो चुका है ऑलमोस्ट. तो सेकंड होगा आंसर या फिर थर्ड होगा. लेट्स सी हु आंसर्स द करेक्ट वन. सेकंड, सीइंग द डेमोक्रेसी. कैन यू सी द डेमोक्रेसी देयर? ये बात कर रहा है कैन यू सी द डेमोक्रेसी देयर, मतलब इनकी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है. तो कौन सा चैलेंज होगा? फर्स्ट वाला, दैट इज फाउंडेशनल चैलेंज. ना थर्ड वाला, लिबरल जेंडर इक्वालिटी. द लिबरल पार्टी डिमांड्स जेंडर इक्वालिटी एंड पार्टी, तो डज नॉट अप्लाई व्हेन पिकिंग देयर ओन लीडर. तो ये बोल रही है कि भाई देखो, दे वांट जेंडर इक्वालिटी, लेकिन तब इनको खुद पे बात आती है तो दे डोंट वांट. तो इससे जो है वो हम इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं. इंस्टीट्यूशंस तो अभी भी आते हैं, तो वी टॉक अबाउट डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. अब कैंपेन मनी, ये आ गया मनी की बात, और हमने पढ़ा था ऊपर. तो लेट मी सी हु आंसर्स द करेक्ट वन इन दिस वन आल्सो, 2 या 3. आई होप यू वुड आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई वुड श्योरली रिप्लाई यू. अब ये जो सारी एक्टिविटीज है ये एग्जाम में नहीं आती है, बट इफ यू वांट टू प्रैक्टिस यू कैन प्रैक्टिस देम वंस. ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस. देखो, नाउ दैट यू हैव नोटेड डाउन ऑल दीज चैलेंजेस, let us group these together into some broad categories. Given below are some pairs or sides of democratic politics. You may place against each of these the specific challenge that you noted for one or more countries or cartoons in the previous section. In addition to that, write one item for India for each of these pairs. In case you find that some challenges do not fit into any of the categories, you can create new categories and put some items under that. ये दोबारा एक्टिविटी है, तो मैं बेसिकली आपको ना विद रिस्पेक्ट टू इंडिया हर कैटेगरी में आपको मैं एक एक एग्जाम्पल दे देती हूँ. तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, तो लेट्स से फाउंडेशनल चैलेंज होगा ये, ठीक है. फाउंडेशनल चैलेंज क्यों होगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब की है, एंड जैसे कंट्री लाइक चाइना, सऊदी अरेबिया, ये सब हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन. फिर है डेमोक्रेटिक राइट्स, तो जैसे इसमें आ गया हमारा डीपनिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी वाला एग्जांपल, हम दोबारा सऊदी अरेबिया दे सकते हैं. फिर आ गया वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये हो गया हमारा चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन. क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन से डील कर रहा है. एग्जांपल वी कैन राइट नेपाल. फिर है इलेक्शंस, ये भी हो गया हमारा डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. क्यों? क्योंकि हम इसको ज़्यादा फ्री एंड फेयर बनाना चाहते हैं. एग्जाम्पल हो गया हमारा मेक्सिको. नेक्स्ट, फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब ये भी डीपनिंग होगा. क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट के पास भी पावर हो. इसका एग्जाम्पल हो गया इंडिया, बेल्जियम, ये सब भी लिख सकते हैं. एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी, ये भी हो गया हमारा डीपनिंग वाला. सेम, वाई?
क्योंकि ये जो स्टेप है इट इज टुवर्ड्स सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी. एग्जाम्पल इंडिया. अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, देखो ये हो गया हमारा फाउंडेशनल चैलेंज. क्यों? क्योंकि द फाउंडेशनल चैलेंज इन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स. एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा साउथ अफ्रीका या फिर नॉर्दर्न आयरलैंड. ये तो हो गया हमारा ये सब कैटेगरीज. अगर आपको और कैटेगरीज बनानी है तो यू कैन राइट लाइक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो मतलब इलेक्शंस की सब हेडिंग हो जाएगी. इसमें आप लिख सकते हो चैलेंज ऑफ डीपनिंग वाला हो जाएगा एंड एक्सेट्रा. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे. नाउ let us group these again, this time by the nature of these challenges as per the classification suggested in the first section. For each of these categories, find at least one example from India as well. देखो ये सब तो मैंने आपको इसी में हाईलाइट कर दिया है फाउंडेशन वगैरह, तो यू कैन राइट दी सेम. इंडिया के बारे में आप कमेंट बॉक्स में दो. लेट्स सी हु आंसर्स द करेक्ट वन अगेन. ये जो चैप्टर है ना इट इज़ मोर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड. इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते. बेसिकली चैलेंजेस आते हैं कि एक्सप्लेन like challenges, mention any 3 challenges to democracy faced by India, या फिर name 3 challenges in common, जो 3 बताए थे ना, foundational, expansion और deepening of democracy. ये basically आते हैं. अब हम मूव करते हैं ये वाली एक्टिविटी पे. तो ये क्या कहते हैं, now let us think only about India. अब हम बस इंडिया की बात करेंगे. Think of all the challenges that democracy faces in contemporary India and list those 5 that should be addressed first of all. The listing should be in order of priority, that is the challenge you find most important. Let's start. तो basically पहले तो हम बोल सकते हैं कि हमने जो challenges पहले किए थे हम उसी को इसमें लिख सकते हैं ना मोडेड फॉर्म. लेट्स से भाई पहले तो मेरी प्रायोरिटी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, तो मैं रीजन ऑफ प्रेफरेंस लिखूंगी फ्री एंड फेयर इलेक्शन. जैसे वी कैन से रिड्यूस रूल ऑफ मनी एंड मसल पावर. और इसमें एग्जाम्पल इसमें बेसिकली चैलेंज क्या होगा हमारा, लेट्स से मैं लिख रही हूँ पॉलिटिक्स, लाइक वी कैन राइट करप्शन इन पॉलिटिक्स और वी कैन राइट क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स एक्सेट्रा. एंड सेकेंड मेरे लिए है कि टू रिमूव करप्शन. ये तो हो गया फ्री एंड फेयर इलेक्शन. अब मैं भाई अपनी कंट्री से करप्शन रिमूव करवाना चाहती हूँ, तो मेरे लिए सेकेंड इंपॉर्टेंट हो गया टू रिमूव करप्शन. जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी या करप्शन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जिसको हम हिंदी में रिश्वत भी बोलते हैं. इसका हेडिंग तो भाई मैं करप्शन ही लिख रही हूँ. अब थर्ड जैसे मेरे लिए हो गया सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो सब तक पहुँचने चाहिए, दैट इज वो ग्रास रूट लेवल्स तक पहुँचने चाहिए. एंड नो वन शुड हैव एब्सोल्यूट पावर, सबके में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. तो एग्जाम्पल हो सकता है हम कुछ अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में DPSPs है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, हम उसको फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसका हेडिंग मेरा हो गया भाई ये तो फाउंडेशनल चैलेंज है, क्योंकि अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन है तो फाउंडेशनल चैलेंजेस. ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग ये टेबल्स फिल कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. Each of these challenges is linked to the possibility of reforms. As mentioned above, we discuss challenges only because we think we can overcome. Generally, all the suggestions or proposals about overcoming various challenges to democracy are called democracy reform or political reform. ये हो गई हमारी definition. जा सकते हैं 1 marker में, so make sure you learn this. We are not going to give here a list of desirable political reforms, for there cannot be any such list. If all the countries do not have the same challenges, it follows that everyone cannot follow the same recipe of political reforms. क्यों? क्योंकि situations different है. Hence, we cannot prescribe a procedure for car repair without knowing which model the car is, what the problem is, what tools are available, where the car has broken down, etc. So we are comparing it with the example of car. Now, we can develop some proposals for reform at the national level, but the real challenge of reforms may not lie at the national level. Some of these may lie at state या फिर local level. Besides, such a list may become irrelevant after some time क्योंकि situation changes. So, instead of that, let us think of some broad guidelines that can be kept in mind while devising ways and means for political reforms in India. तो basically हम कोई particular reforms नहीं दे रहे हैं, we are just giving broad reforms. पहला है
It is very tempting to think of legal ways of reforming politics, to think of new laws to ban undesirable things, but it's need to be resisted. No doubt, law has an important role to play in political reform. Carefully devised changes in law can help to discourage wrong political processes and encourage good ones. But legal constitutional changes by themselves cannot overcome challenge to democracy. ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि बस पेपर वर्क से काम नहीं चलेगा. People also need to be vigilant. Now, this is like the rule of cricket. A change in rules for LPW decisions is helped to reduce negative batting tactics. But no one would ever think that the quality of cricket could be improved mainly through change in the rules. It has to be done by players, coaches, and administrators. Similarly, democratic reforms are to be carried out mainly by political activists, parties, movement, and conscious citizens. Now moving on to the second reform. Any legal change must carefully look at what results it will have on politics. Sometimes the result may be counterproductive, like many states have banned people who have more than 2 children from contesting panchayat election, and it has resulted in denial of democratic opportunity to many poor and women, which was not intended. क्यों? क्योंकि जैसे लाइक पास्ट में ना men or women prefer to have more children because conditions अच्छी नहीं थी, तो उन्हें पता नहीं था कि सर्वाइव होगा या नहीं. तो इसकी वजह से क्या है, डेमोक्रेटिक अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिल पाती थी क्योंकि दे वर बैड फ्रॉम एंटरिंग एंड कंटेस्टिंग पंचायत इलेक्शन. Hence, generally laws that seek to ban something are not very successful in politics. Laws that give political actors incentives to do good things have more chance of working. The best laws are those which empower people to carry out democratic reform. जैसे RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में बता चुकी हूँ कि RTI के थ्रू we can ask questions to the government. And such a law helps to control corruption, supplements the existing laws that ban corruption and impose strict penalties. And इसके through we can keep a check on the government also. अब हम बात करेंगे थर्ड की. तो democratic reforms are to be brought about principally through political practice. Therefore, the main focus of political reform should be on ways to strengthen democratic practice. As we discussed in the chapter on political parties, the most important concern should be to increase and improve the quality of political participation by ordinary citizen. क्यों? क्योंकि अगर वो increase होंगे तभी वो aware होंगे तभी हमारे reforms आएंगे. That is fine. Now moving on to the next part. Any proposal for political reform should think not only about what is a good solution, but also about who will implement it how. देखो, let's say भाई मेरा ये challenge है, मैंने एक reform बनाया to counter this. But it should also deal with कौन implement करेगा, कैसे implement करेगा, कितने कितने stages में होगा. And it is not very wise to think that the legislatures will pass legislations that go against the interests of all political parties and MPs. But measures that rely on democratic movements, citizen organizations and the media are likely to succeed. क्यों? क्योंकि democracy में people have more power. Now, let us keep these general guidelines in mind and look at some specific instances of challenges to democracy that require some measure of reform. Let us try to come up with some concrete proposals of reform. अब हम बेसिकली मतलब हम पर्टिकुलर चैलेंज पढ़ेंगे एंड वी विल ट्राई कि हम एक रिफॉर्म ला सकें. ये सब क्वेश्चंस केस भी स्टडी में आ सकते हैं, एज अ पैराग्राफ आ सकते हैं. तो मेक श्योर एक बार आप उनको रीड कर लो एंड इन माई नोट्स आई विल प्रोवाइड ऑल द आंसर्स, सो डोंट वरी. नाउ here are some challenges that require political. Now discuss the challenges in detail and study the reform options offered here and give your preferred solution with reason. ये आपकी personal activity है, you can deal with this and if you have any doubts you can write it in the comment box and I will make sure that I will go through them. ये सब हो गया, ये story है. Now moving on to the next topic which is redefining democracy. So we began this tour of democracy last year with a minimal definition of democracy. This is what chapter 2 of your textbook said last year. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. We then looked at many cases and expanded the definition slightly to add some qualifications. That is, the rulers elected by the people must take all the major decisions. Elections must offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. ये जो 4 points है, basically you can also write it as features of democracy. ठीक है. Third है, this choice and opportunity should be available to all the people on equal basis.
then the exercise of this choice must lead to a government limited by basic rules of the Constitution and citizen right. But you may have felt disappointed with that कि जो definition है did not refer to any high ideals that we associate with democracy. But in operational terms, reality में we deliberately started with a minimalistic but clear definition of democracy, and it allowed us to make a clear distinction between democratic and non-democratic strands. And now we are crystal clear about that concept. Now, you may have noticed that in the course of our discussion of various aspects of democratic government and politics, we have gone beyond that definition. We discussed democratic rights at length and noted that these rights are not limited to right to vote, stand election, and form political organization. But we also have some social and economic rights that a democracy should offer to its citizens, जैसे freedom to speech and expression, right to life and liberty, and all these, right to earn livelihood, ये सब. Next point. We have taken up power sharing as the spirit of democracy and discussed how power sharing between governments and social group is necessary in a democracy. हम already first chapter में पढ़ चुके हैं. Now third point, we saw how democracy cannot be the brute rule of majority and how a respect for minority voice is necessary for democracy. हमने पढ़ा था कि democracy का main aspect है कि it should accommodate different interests at the same time. Now, our discussion of democracy has gone beyond the government and its activities. We discussed how eliminating discrimination based on caste, religion and gender is important in a society. ये हमने पढ़ा था gender, religion and caste में. अगर हम नहीं करेंगे तो क्या क्या threats हो सकते हैं democracy को, वो हम already पढ़ चुके हैं. Finally, we have had some discussion about some outcomes that one can expect from a democracy. हमने इसमें compare किया था actual outcomes को and then real outcomes को. ठीक है? Now, in doing so, we have not gone against the definition of democracy offered last year. We began then with the definition of what is the minimum a country must have to be called a democracy. In the course of our discussion, we moved to the set of desirable conditions that a democracy should have. We have moved from the definition of democracy to the description of a good democracy, which dealt with how do we define a good democracy, what are its features, and what must not take place in a democracy if it is a good democracy and all. ये आपको ये जो क्वेश्चंस है आप easily आंसर कर सकते हो because you have thoroughly studied the class 10th as well as class 9 civics, and through this we complete our course of civics and I will upload the notes in the description box, so make sure you read them और मैं ये सारे situation के answers provide कर दूंगी. And thank you for watching the video. If you like the video, please share, subscribe and comment. Thank you everyone.